एक कमेटी बना लिया, वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्स्टिट्यूट हो गया और उन्होंने कहा कि ये सच एंड सच यही हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रहेगा। अब आगे उसका क्या काम है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो आपको बताता हूं, और फिर वापिस आप कोर्ट में कब जा सकते हैं। और इन चीजों पे एक और चीज बता दूं, एनसीएलटी ने जो भी ऑर्डर इस केस में किया हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में, चाहे वो ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में, वो जो ऑर्डर है एडमिशन का, दैट कैन बी चैलेंज्ड बिफोर एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल, राइट। सो फार एज यूटी ऑफ J&K इज कंसर्न, हमारी जो एनसीएलएटी है वो दिल्ली है, एनसीएलटी हमारे लिए चंडीगढ़ है। अगर J&K से कोई भी केस हमें फाइल करना है तो एनसीएलटी चंडीगढ़ में होगा, और अगर उसका अपील फाइल होना है तो एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल, दिल्ली में होगा, राइट। अब ये जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्स्टिट्यूट हुआ, इसके बीच में सबसे पहले देखा जाएगा कि एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाए। देखिए, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ना, इसका सबसे बड़ा जो मकसद है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द एसेट्स। अब जो कंपनी ऑलरेडी अपने डेब्ट्स को डिस्चार्ज करने में इंसॉल्वेंट है, नहीं कर सकती, उनके डेब्ट्स ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो उस कंडीशन में ऐसा क्या किया जाए कि उस कंपनी के एसेट्स का वैल्यू मैक्सिमम मिल सके, और वो मैक्सिमम पैसा जो है, जो लेनदार हैं, जो क्रेडिटर्स है, उनको जा सके, राइट। दिस इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब इसके बीच में किया क्या जाएगा, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है सबसे पहले वो कोशिश करेगा कि क्या इस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है, क्या इस कंपनी का कोई किसी किस्म का ऐसा कुछ प्लान बन सकता है जिससे ये कंपनी वापस रिवाइव हो जाए और अपने डेब्ट्स को भी डिस्चार्ज कर सके और ये कंपनी आगे चल भी सके। उसके लिए क्या किया जा सकता है वो आपको बताता हूं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर वो इनवाइट कर सकता है रेजोल्यूशन प्लान। अब मान लीजिए कोई XYZ आदमी वो कहता है कि इस सच एंड सच कंपनी में मैं इंटरेस्टेड हूं जी, मैं इस कंपनी को खरीदना चाहता हूं, या मेरी सच एंड सच कंपनी है, मैं उसके साथ इसको मर्ज कर लूंगा, या मैं इसको एक्वायर कर लेता हूं और बदले में मैं इनके जो जितने भी डेब्ट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। तो एक वो इसका रेजोल्यूशन प्लान हो गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है वो पेपर मैन्युफैक्चर करती है, राइट, कोई भी XYZ कंपनी। अब अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाती है और अपने डेब्ट्स को डिस्चार्ज नहीं कर पाती, और CIRP NCLT जो है इनिशिएट कर देती है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आ गया। अब उस कंडीशन के बीच में अगर कोई ABC नाम की कोई बड़ी कंपनी है पेपर बनाने वाली, वो कहते हैं कि ये जो छोटी कंपनी है जो इंसॉल्वेंट हो रही है, हम इसको खरीद लेते हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, ये हमारी एक सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, हमें भी फायदा, हमें इतना मशीनरी और इतना सब जो है एक साथ में बनाने में जो टाइम और जो वैल्यू लगेगा हमारा वो नहीं लगेगा, बदले में हम इनके जो डेब्ट्स हैं वो डिस्चार्ज कर देते हैं। तो उस कंडीशन में जो बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनी को खरीदने के लिए या एक्वायर करने के लिए एक अपना रेजोल्यूशन प्लान जो है वो सबमिट कर सकती है कि जी हमारे पास ये रेजोल्यूशन प्लान है, इसके अकॉर्डिंगली जो है हम इस कंपनी का जितने भी जो डेब्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करेंगे और ऐसे ऐसे ही कंपनी को हम चला सकते हैं, राइट। दूसरा कंडीशन, अगर मान लीजिए कोई भी सामने नहीं आता, एक और चीज बताऊं, जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है ना, उनमें से भी कोई इसका रेजोल्यूशन प्रपोज कर सकता है, उनमें से भी कोई एक रेजोल्यूशन लेकर आ सकता है कि भाई सच एंड सच तरीके से इस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है, या फिर वो वॉलंटियर कर सकता है कि जी मैं इस कंपनी को खरीदने को तैयार हूं, या इसको एक्वायर करने को तैयार हूं, या मर्ज करने को तैयार हूं अपने बीच में, या अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाना चाहता हूं, राइट। अब जो भी रेजोल्यूशन प्लान सामने आया, अब वो जो रेजोल्यूशन प्लान है, अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स डिसाइड करती है कि वी आर ओके विद दिस रेजोल्यूशन प्लान, इस रेजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया जाए,
तो फिर वो जो रेजोल्यूशन प्लान है वो एनसीएलटी के सामने रखा जाएगा और बताया जाएगा कि जी ये फाइनल है, और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, राइट। और उसी के अकॉर्डिंगली आगे जो जिनके जो डेब्ट्स हैं वो डिस्चार्ज किए जाएंगे। बट आपको एक चीज और बताऊं, मान लीजिए जिस कंपनी को कोई दूसरी कंपनी खरीदने के लिए या एक्वायर करने के लिए प्रपोज कर रही है रेजोल्यूशन प्रोसेस में, अगर उसको लगता है कि जी इस कंपनी के तो एसेट्स सही में बहुत कम है, अगर इतने एसेट्स हमने बनाने हो या कुछ भी करना हो तो हमारा पैसा कम लगेगा, तो उस कंडीशन में वो थोड़ा मतलब कम पैसे से भी प्रपोज कर सकते हैं कि हम इतने तक का करेंगे, राइट। जैसे मान लीजिए अगर एक कंपनी के 10 CR के जो है डेब्ट्स है और उसके एसेट्स का वैल्यू 7-8 करोड़ समथिंग बनता है, राइट। तो जो कंपनी उसको एक्वायर करना चाहती है वो उसके बदले में 10 करोड़ क्यों देगी? इन कंडीशंस के बीच में जो उसका एक्चुअल एसेट वैल्यू होगा उसके साथ में अगर उस कंपनी का कोई गुडविल है या उसका जो ऑलरेडी मार्केटिंग और बाकी सब चीजों का जो मैकेनिज्म बना है जिसका फायदा खरीदने वाले को या इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रपोज करने वाले को मिलना है, वो इन चीजों को भी देखा जाएगा। तो इस कंडीशन में ये डिसाइड करेगी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कि किसके रेजोल्यूशन प्लान को माना जाए। अब एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान ही ना निकले, मान लीजिए एसेट्स बहुत ही कम हैं, किसी कंपनी ने से 50 CR देना है, 50 करोड़ देना है, बट उसके एसेट्स 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के हैं, राइट। तो कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन के बीच में अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, उसको लिक्विडेट करना। अगर कोई उसको खरीदने को तैयार नहीं है उस कंपनी को, या उसको खरीदना किसी के लिए भी किसी के हक में नहीं है, तो उस कंडीशन के बीच में जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा वो पूरा अपना एक रिपोर्ट बनाएगा और वो कोर्ट के आगे रख देगा, जिसमें वो बताएगा कि इस कंपनी का रिवाइवल पॉसिबल नहीं है। सर्टेनली जो भी वो रेजोल्यूशन होगा उसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को अप्रूव करना है, और एटलीस्ट 75% वोट्स के साथ में, राइट। तो उस रेजोल्यूशन प्रोसेस को एनसीएलटी को एक्सेप्ट करना है। आपको एक चीज और बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को भी टाइम बाउंड किया गया है। अर्लियर जो पुराने लॉज थे उनमें कोई टाइम का लिमिट नहीं था। जैसे आपको याद होगा कि पहले कंपनीज एक्ट के अंडर कई बार हम लोग वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल करते थे, हमारे तो J&K हाई कोर्ट में ही हो जाती थी पहले। बाद में जो वाइंडिंग अप पिटीशंस हैं वो भी जो है एनसीएलटी के बनने के बाद में वहां पर ट्रांसफर हो गई, तो उनमें टाइम बहुत लगता था। अब इनमें ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है इसके बीच में उन्होंने जो टाइम लिमिट फिक्स किया दैट इज 180 डेज, 180 डेज, 180 दिन के अंदर अंदर जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाएगा। मतलब इसको काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक मोड पे इसके जो प्रोसेसेस है उनको रखा जाता है। अब मान लीजिए किसी वजह से 180 डेज में अगर पूरा रेजोल्यूशन कंप्लीट ना हो पाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन करने वाला जो आईपी है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है और टाइम मांग सकता है, और कोर्ट उस कंडीशन में उसको 90 दिन का और टाइम दे सकती है, 90 डेज का टाइम और दे सकती है, बट उसके बाद में ये एक्सटेंड नहीं होगा। अब ये जो लिटिगेशन इसके अंडर है, सबसे इसका जो अच्छा जो फ्रेमवर्क है वो ये है कि ये टाइम बाउंड है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है 180 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो अगले 90 दिन मिलेंगे और उसके बीच में सम हाउ उनको कंप्लीट करना ही करना है। अब आपको एक और चीज बताओ, जिन कंडीशंस में रिवाइवल नहीं हो सकता किसी कंपनी का और लिक्विडेशन प्रपोज की जाती है, उस कंडीशन में जो लिक्विडेटर है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही होगा। वो फिर उसके सारे एसेट्स को इस तरह से लिक्विडेट करने का प्लान बनाएगा कि उनका जो एसेट्स का वैल्यू है वो मैक्सिमम मिल सके।
और जितना पैसा जो रिकवर होगा वो जो है वो क्रेडिटर्स के बीच में जाएगा, राइट। अब आपको एक और चीज मैं बताऊं, मान लीजिए फाइनेंशियल क्रेडिटर है, आपको पता होगा सरफासी एक्ट के बारे में। हमारे जो बैंक्स हैं वो सबसे पहले सरफासी को इन्वोक करते हैं एनपीएस के केसेस में, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। देखिए, अगर बैंक किसी को लोन दे रहा है ना, तो वो उसके लिए एक एसेट है, क्योंकि उससे उसको पैसा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो अगर उसका एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर उसको पैसा वापस नहीं आ रहा, तो वो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, आपको मालूम है। उस कंडीशन में अगर बैंक के पास में अगर कोई चीज किसी का मॉर्टगेज्ड है, कोई भी मॉर्टगेज कर कर कोई लैंड, जमीन, स्टॉक, कुछ भी जो भी मॉर्टगेज करके रखा है, वो उसको जो है पहले क्लेम करेगा। सरफासी का जो भी प्रोसीजर है वो उसको अडॉप्ट करेगा। बट आपको एक चीज और बताऊं, अगर बैंक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर अप्लाई करता है और यहां पे बताता है कि ये सच है, सच तो मेरे पास में सिक्योरिटीज हैं, बट इन सिक्योरिटीज के अलावा भी मेरा पैसा है और जो बाकी एसेट्स हैं वो मेरे पास एज ए सिक्योरिटी नहीं है, तो उस कंडीशन के बीच में बैंक को भी फायदा है। जितना बैंक को सरफासी में है उससे ज्यादा इसमें फायदा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। अब जो एडवोकेट्स बैंक्स का लिटिगेशन हैंडल करते हैं, वो उनको अप्रोप्रिएट केसेस में एडवाइस कर सकते हैं जी कि आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जाइए, दिस इज अ फास्टर रेमेडी, और इसके बीच में आपको जो है ज्यादा, आपका जो रिटर्न निकलने का जो है वो ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि सेटलमेंट्स होती हैं बैंक्स के साथ में, सरफासी के केसेस में भी। तो उनके बीच में भी अगर कोई बैंक का सपोज 10 CR है, बट उनके पास जो एसेट है, अगर मान लीजिए उसका वैल्यू उतना नहीं है, वैल्यू डिग्रेड हो चुका है, जैसे कई बार क्या करती हैं कंपनीज अपने स्टॉक को भी दिखा देती हैं और बड़ी बड़ी लिमिट्स ले लेती हैं कि जी हमारा ये इतना जमीन है, इतनी फैक्ट्री है, और साथ में इसके अंदर इतना सारा स्टॉक है। से कंपनी ने दिखाया कि हमारा 10 करोड़ का स्टॉक है, 5 करोड़ की हमारी फैक्ट्री है, तो 15 करोड़ हमारी वैल्यू है। बैंक उनको हैप्पीली 15 करोड़ के करीब करीब लिमिट दे देगा, 14-15 करोड़ का। बट मान लीजिए असल में उसका स्टॉक नहीं है, या उसका स्टॉक खत्म हो गया, या कोई एक्ट ऑफ गॉड की वजह से स्टॉक चला गया, कुछ भी हुआ और इंश्योर्ड नहीं है, और यहाँ उसने स्टॉक शो किया बट असल में नहीं था, ऐसे भी बहुत से केसेस हम लोगों ने देखे हैं। तो उस कंडीशन में जब बैंक को मालूम है कि जी असली में हमारा, हमने 14-15 करोड़ जो है इसको दिया हुआ है, बट हमारे पास में जो इनके एसेट्स मॉर्गेज हैं वो तो 5 करोड़ के ही हैं, तो उस कंडीशन में बैंक को उसमें नुकसान है। बट अगर वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जाते हैं, तो जो चीज उनके पास में उनका मॉर्गेज है वो तो है ही है, बट अगर इसी कंपनी की कोई सब्सिडरी है या कोई और इस कंपनी के कुछ और एसेट्स हैं जो बैंक के पास मॉर्गेज नहीं भी है, तो बैंक जो है, बैंक को उन एसेट्स का भी फायदा मिल जाएगा, राइट। ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, इसकी यही मतलब एक बड़ा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इसका हमने बनाया है, जिसमें सबका एक विन विन सिचुएशन है। आपको एक और चीज बताऊं, रियल इस्टेट के बीच में कई रियल इस्टेट कंपनीज होती हैं जो लोगों को कहती हैं जी कि हम सच एंड सच फ्लैट्स बना रहे हैं या कोई कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं। उन केसेस में लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी जिसने किसी के फ्लैट्स के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, कहा जी कि मेरे को भी एक फ्लैट दे देना, ये मैं आपके प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगा रहा हूँ, या रियल इस्टेट डेवलपमेंट वाले डेवलपर ने कहा कि जी आप मुझे इतना पैसा दीजिए, 50 लाख दीजिए, एक फ्लैट आपको देंगे, या एक मॉल में आपको दुकान देंगे। अब मान लीजिए वो जो रियल इस्टेट डेवलपर है वो एक कंपनी है और वो इंसॉल्वेंट है, ना वो बिल्डिंग बना रही है और ना वो पैसा दे रही है जो ले लिया। उस कंडीशन के बीच में जेपी इंफ्राटेक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया कि जो होम बायर्स है या फ्लैट बायर्स हैं या मॉल में दुकान खरीदने वाले हैं, रियल एस्टेट कंपनी के वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर की लिस्ट में आएंगे, राइट। सो इस तरह का अगर आपके पास कोई मैटर हो तो आप उसको भी फाइनेंशियल क्रेडिटर के बीच में ला सकते हैं। बड़ी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है इस फील्ड में, बट यूटी ऑफ जे के लॉयर्स के बीच में ये अनटच्ड है। इसका फॉर्चुनेटली जो फर्स्ट केस था
ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का यूटी ऑफ जे से वो मैंने किया है। बट आई टेल यू उसके बाद में क्योंकि जो लिमिट था, थ्रेशोल्ड लिमिट, ये रेज कर दिया गया 2020 में 1 CR तक, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के कुछ ज्यादा केसेस जे से इसमें जनरेट नहीं हुए, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, और जो लॉयर्स हैं वो भी इसके बीच में थोड़ा सा अनटच्ड है, क्योंकि इसकी जो कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है। बट आई टेल यू इसकी प्रैक्टिस बहुत ब्यूटीफुल है, और इसके बीच में बहुत ज्यादा मतलब पेइंग लिटिगेशन है, राइट। अब ये मैं आपको बता रहा था कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द कंपनीज, अगर किसी कंपनी से या एलएलपी से अगर आपने पैसा लिया है। अब जो इसका पार्ट थर्ड है ना, दैट परटेन्स टू द सोल प्रोपराइटर्स एंड द पार्टनरशिप कंसर्न्स। जो इसका पार्ट थर्ड है उसके बीच में एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन इन्होंने बनाया है, वो है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। सेक्शन 78 के परटेनिंग है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। अब अगर सपोज कर लीजिए कोई प्रोपराइटर फर्म है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, प्रोपराइटर एंटाइटी है या पार्टनरशिप कंसर्न है, मान लीजिए उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसका जो बिजनेस है वो नहीं चला, अनफॉर्चुनेटली डूब गया, या वो अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा देने में इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस कंडीशन के बीच में वो फ्रेश स्टार्ट के लिए एक एप्लीकेशन लगा सकता है, और वो एप्लीकेशन डीआरटी में लगेगी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वो एनसीएलटी में नहीं लगेगी, राइट। अब फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए आपको एक चीज और बता दूं, जो डेब्ट है उसका वो 60,000 से रिसीव नहीं होना चाहिए, उसकी जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो 20,000 के नीचे होना चाहिए, राइट। तो वो एक एप्लीकेशन दे सकता है फ्रेश स्टार्ट के लिए कि जी मेरे जो एग्जिस्टिंग डेब्ट्स हैं मुझे उससे डिस्चार्ज किया जाए, मैं फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ और ये मेरी कंडीशंस है। एक ये इसका इसके बीच में बताया गया है। अब जो दूसरी चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के प्रोटेनिंग, ऑब्वियसली जिसका 60,000 का डेप्ट है या कुछ भी है, आप उसका केस फाइल करने में डीआरटी चंडीगढ़ जाकर पॉसिबल नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं जो हम लोग कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस में। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म से हमने पैसा लेना है या किसी प्रोपराइटर से किसी ने पैसा लेना है, उस कंडीशन में सेक्शन 94, 95 और 96 है, राइट। 95 के अंडर जो है आप एप्लीकेशन देंगे कि ये सच एंड सच डेप्टर से मैंने इतना पैसा लेना है और मेरा इतना पैसा बनता है, मटेरियल वही लगाएंगे जो आपको मैंने बताया जो एनसीएलटी में लगता है, राइट। अपने बैलेंस शीट, लेजर्स, और कोई भी एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, इनवॉइसेस, जो जो भी आपके डेप्ट के प्रूफ्स हैं वो आप उसमें लगाएंगे, राइट। और वो एप्लीकेशन आप डीआरटी में, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में देंगे। हमारा डीआरटी भी चंडीगढ़ में है, आपको पता ही होगा, क्योंकि सरपासी के भी अब केसेस वहां पर जाने लगे हैं। अब हमारा हाई कोर्ट उनको एंटरटेन नहीं कर रहा है। जैसे सेक्शन 13 और 14 में कंपनीज के प्रटेनी मॉरिटोरियम डिक्लेयर होगा, वैसे ही पार्टनरशिप के और प्रोपराइटर के प्रटेनिंग भी सेक्शन 96 के अंडर डीआरटी मॉरिटोरियम डिक्लेयर कर सकती है, राइट। और उसी तरह से उसमें भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली उसका एक रेजोल्यूशन जो है प्लान बनाया जाएगा, और उसी तरह से उसमें भी चीजें चलेंगी जैसे इसमें चलेंगी कंपनीज के केस में, जो मैंने पार्ट 2 के बारे में बताया आईबीसी के, राइट। ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ना, इसके बीच में एक दो है, वो ये है कि अगर कोई क्रेडिटर, तो चलो जिसने पैसा लेना है वो एनसीएलटी को अप्रोच कर रहा है, मान लीजिए मैं डेब्टर हूं, मैंने लोगों का पैसा देना है बट आई एम अनेबल टू डिस्चार्ज माई डेब्ट्स, मैं खुद ही कहता हूं कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मैं आपका पैसा नहीं दे सकता, तो उस कंडीशन में एक जो कॉर्पोरेट डेब्टर है वो भी एनसीएलटी को अप्रोच कर सकता है, अगर वो कंपनी या एलएलपी है, राइट। एनसीएलटी को, अगर वो सोल प्रोपराइटर है या पार्टनरशिप है तो सेक्शन 94 के अंडर डीआरटी को अप्रोच कर सकता है,
कॉर्पोरेट डेप्टर के लिए भी इसमें प्रोविजंस रखे गए हैं कि एक डेप्टर भी खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा सकता है। जैसे आपको इसका कंसेप्ट पता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, LLP, जिसमें लायबिलिटी आपकी लिमिटेड है, इसका भी एक्ट कानून है पूरा। जैसे पार्टनरशिप एक्ट है वैसे ही लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, राइट। अब इसमें जो लायबिलिटी रहता है ना, जैसे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इनमें जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहता है। ये रहता है अप टू दी एसेट्स ऑफ द कंपनी। एसेट्स कंपनी के क्या एसेट्स हैं, कंपनी के पास क्या है, पर्सनल एसेट्स पे नहीं आती बात, राइट। अब जैसे बैंक्स हैं, अब मान लीजिए बैंक्स क्या करते हैं, किसी को गारंटर बना लेते हैं, राइट। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो एज ए लॉयर आपको काम आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा कि जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, इसको एक बैंक का गारंटर भी इनिशिएट कर सकता है। बैंक का गारंटर, जजमेंट है इसके बीच में। मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप लोग कभी, क्योंकि ये कोड बहुत लेंथी है, अगर आप लोग कभी इसको डिवाइड करके अगर आप लोग कुछ लेक्चर्स इसमें रख पाओ तो मैं आपको प्रैक्टिकली इसके जो बाकी टिप्स हैं जो इसकी प्रैक्टिस के कंसर्निंग है मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि एनसीएलटी और एनसीएलएटी इन केसेस में मैं अपीयर हुआ हूँ तो आपको मैं प्रैक्टिकली बता सकता हूँ, और आप लोग उन चीजों को अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्लाइंट्स को अकॉर्डिंगली एडवाइस कर सकते हैं। कोर्टकास्ट को मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ कि वो काफी प्रोफेशनल एक्सीलेंस जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं लॉयर्स के बीच में, और जो बाकी लोग भी जो हैं जो इनको व्यू करते हैं, इनके वेबसाइट पे जाते हैं या इनकी चीजों को व्यू करते हैं, वो उनको इन चीजों का काफी जो अवेयरनेस है वो मिलेगा। और कहीं ना कहीं आम आदमी तक भी इसका जो अवेयरनेस है वो पहुंचेगी। आई एम सॉरी टू से कि आम आदमी तक इस कोड का J&K के बीच में बहुत कम अवेयरनेस है। जो कंपनी सेक्रेटरीज है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, ये लोग बड़े बड़े होटल्स में प्रोग्राम करते हैं और उसके बीच में इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को डिस्कस करते हैं और बताते हैं। अलग अलग जगह पर जाकर, J&K में भी इन्होंने किए हैं, जम्मू में भी कई वाज आल्सो इनवाइटेड। तो इन लोगों ने इस चीज का जो अवेयरनेस है ना ये अपने तक रखा है और लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं। बट इसका जो सबसे ज्यादा फायदा इस लिटिगेशन का जा रहा है वो कंपनी सेक्रेटरीज और सीएस को जा रहा है। हम लोग एज ए लॉयर कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इसमें लैक कर रहे हैं। हम लोग अपने क्लाइंट्स को इस तरह की लेजिस्लेशन के बारे में बताएं और इसका जो फायदा है अपने क्लाइंट तक पहुंचाएं, अपने क्लाइंट को स्पीडी जस्टिस दिला पाए, राइट। अगर आप लोग इसमें कोई सवाल अब तक जो मैंने बताया इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। Thank you so much, sir. It was very enlightening lecture. So anyone who wants to ask a question, they can just raise their hands first, one by one, and they can unmute their call. Mr. Pirzada has raised their hands. Please unmute your mic and ask your question, sir. Yeah. Good afternoon, Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. It was once again. I would like to say, first of all, I would like to welcome you, heartiest congratulations. And simultaneously, I would like to congratulate the Courtcast team that I would say rather, they're evolving better as compared to the previous lectures. And today's guest is very, very much learned in true sense. I would like to say, I don't want to say it on your face, sir, but it was a very elaborate and very learned, comprehensive lecture on this topic, sir. Anytime. This Insolvency and Bankruptcy Code, as your good self has already revealed, that it's a very elaborate and very diverse and vast code. My only request at this point of time is that you were discussing something, you had mentioned something about the exams, the eligibility to become the Yes. Please elaborate that, sir. How to yes. work?
Yes, please. See, so far as the insolvency professionals are concerned, I've already told you that they are the one who possess the license which is granted by the Insolvency and Bankruptcy Board of India, right? There are certain agencies which are authorized to conduct the test for the insolvency professional. Those are the insolvency professional agencies. And those agencies, they have been recognized by the Insolvency and Bankruptcy Board of India. There is a syllabus, right? You can find the syllabus of the insolvency, or I will share it into the group of the podcast. And Sure. in that syllabus, you have to learn about the Companies Act, SARFAESI, this Insolvency and Bankruptcy Code, the procedures of the NCLT, DRT. That is all the syllabus, right? And there is an exam which is conducted. The eligibility is minimum you should have an experience of 10 years as a professional, like company secretary or a CA or an advocate, right? Right. Right. And if you pass that exam, if you qualify that exam, you will be given a license as a insolvency professional. And I tell you, insolvency professionals, they are also paid very handsomely, very handsomely. This is such a branch of litigation from where sky is the limit. One can earn in crores, in crores. I'm telling you Right. this. Interesting. Yeah. Interesting, Because sir. insolvency professional is Yes. the one who will be the in charge of the whole company. He will have to look for the entire resolution of the company, right? Right, sir. So he has to play a very important role. And accordingly, his fee is also fixed. A very handsome fee is paid to the insolvency professional, right? The Right, sir. legitimate fee is very, very handsome. Good. Those Sir. lawyers who are Yeah. interested into the practice of corporate law, they can also opt for this insolvency professional, being an insolvency professional. They can qualify the exam and they can get the license. Sir, this is. Thank you very much, sir. Sir, briefly, sir, one more request, sir. Where in Yes. essence the insolvency IBC, insolvency and bankruptcy code is in essence required? Briefly, sir, can we sum up the areas where we do find it is utility, sir? Yes, yes, yes. This is a very important question. Thank you. See, so far as the utility of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is concerned, it is utilized for the recovery of the debts. I tell you how. If you are a creditor and you want your money back, and if you go into the normal recovery suit, how much time it will take, that you know, as a lawyer, you can Yes, understand how much time it will take in the civil court. Even if you adopt the procedure of the Commercial Courts Act, right? If the debt is about 3 lakhs, Commercial Courts Act, right? right, Still, sir. it will take a lot of time True. because all the recovery suits, they cannot be adjudicated in terms of Order 37 of CPC. Some are converted into, in fact, most are converted into the regular suits. Evidence is led, right? It's a very lengthy and complex process. So far as the recovery of the debt is concerned, if somebody has really become insolvent, this is a very beautiful piece of legislation which is into the interest of not only the debtor but the creditor also. Hmm. It is into the interest of both the debtor as well as the creditor. Editor, yes, sir. If there is a firm from whom your client wants to recover his money, you can file a case under IBC before DRT. The client will pay you for going to DRT. You will be paid a very handsome fee, and you will also be getting justice for your client in a time bound manner. Hmm. Most important thing is not our fee, but the timely justice to the parties, right? Right. So the basic utility of this IBC is in the recovery of the debts,
and the resolution of the companies, those who have become insolvent. Because Yes, sir. the economy of this country, that depends upon the corporate world, right? And if Right. the companies, they are allowed to remain in insolvency, then it would obstruct the flow of wealth, the country as a whole. So this is a law where the Law Commission has beautifully done the economic analysis before bringing this kind of legislation. Before enforcing it, yes. Yes. Sir, my last request, sir, my last question is that Yes. what are the main statutory, adjudicatory bodies, COSA, Authorities. judicial, Yes. which are being created under this IBC, sir? Mainly, sir. You want to know about the adjudicating authorities, right? Yes, sir. Yes. Number one is the NCLT, National Company Law National Tribunal. Company Law Tribunal, yes, sir. NCLT. NCLT, you will have to approach for financial creditor as well as the operational creditor. If the corporate debtor is a company or a LLP, if the corporate debtor is a company or a LLP, then you have to file an application before NCLT. Right. And if the corporate debtor is a proprietor or a partnership firm, then you have to file such an application before Debt Recovery Tribunal, DRT. Right? yes. So Yes, far yes. as the company is concerned, if the corporate debtor is company, if you want to file an application on behalf of a financial creditor, which is a bank or any kind of financial institution, you can file it under Section 7 of IBC before NCLT, right? And if it Again, is the before case NCLT, of yes. yes, Yes, again, Yes, before NCLT, because financial institution or bank is also company. yes, certainly. If you are filing an application against the corporate debtor, which is a company or LLP, then you have to approach NCLT. If you are filing an application against a corporate debtor, which is a proprietor or a partnership, then you have to approach DRT, Debt Recovery Tribunal. And an appeal which arises out of the order of the NCLT, that will go to NCLAT, National Company Law Appellate Tribunal. And if some appeal arises out of the order of DRT, it will go to Debt Recovery Appellate Tribunal, DRAT. Right? Okay. Yes. So far as J&K is concerned, our jurisdiction is with the Chandigarh, NCLT Chandigarh and DRT Chandigarh. And so far as NCLAT is concerned, appeals are concerned, they will go to NCLAT Delhi and DRAT Delhi. Right? Okay. These are the adjudicating authorities. We also have next Thank you question, very much, sir. Mr. Thank you very much. Miss Vani. Miss Vani, could you please unmute your mic and ask your question, please? Yes, thank you so much. I don't have much questions, but I'm thankful for this session. But we need more sessions regarding IBC insolvency. It's actually new for the Jammu and Kashmir people, especially for the lawyers. We don't do practice in this area because it's too far for us, Chandigarh. So No. kindly. See, in this era of virtual modes, nothing is far. Nothing is far. I know. But while coming to the client age, they prefer to take an outsider lawyer rather than take a Jammu and Kashmir lawyer. That I understand. The cost which they have to bear. See, that is something for which we need to find out a solution. Exactly. I tell you, say for example, if you are having an associate at Chandigarh, like I am having, we draft a petition here and send it to our associate at Chandigarh. He files it there, and thereafter you can appear through virtual mode before NCLT, and you can get the matter adjudicated from Srinagar. Agree, sir, but we need to work on it, so where we can get a centrally located for Jammu as well as for the Kashmir people, so we can do together. One day it is going to happen. I tell you, someday it is going to happen. We will be having DRT very soon. That's because great, we are and having we so need many more cases. lectures on Yeah. IBC.
We need more lectures. This is the only one lecture. We cannot, somewhere we are lacking, but we need more lectures with the judgments. I am always available for my advocates, always available. Whenever you feel Thank you. convenient, invite me. I'll be glad to help you all. Thank you so much. Pleasure. Mr. Musharraf has raised his hands. Kindly unmute your mic. Hello, Nonu sir. So I had a question with regard to the workman rights. What are actually the workman rights during the CRPC process? Yes, Also, yes. is there any distribution of assets with? I mean, is there any hierarchy for the distribution of Yes. assets? Yes. Yeah. It's a And very the last question, if the time permits, if you may throw some light on or briefly explain the Ruchi Soya case as well, it'll be kind of you. yes. Let me tell you, first of all, you were asking about firstly, what have you asked? Your first question? You The asked three rights of questions. the workmen during the Workmen, CRPC yes, process. yes, yes. Yeah. So far as the worksmen are concerned, they are also to be treated as the creditors of the company or the creditors of the organization. And whenever the committee of creditors is formed, they are also treated as a part of the committee of the creditors, but they don't have a right to vote. Right to vote vests with the financial creditors initially, right? And during the corporate insolvency resolution process, they are also entitled to file their claims before the insolvency professional regarding their salary or any other kind of compensation or whatever, right? They have to file their complaint. They have to file their claim before the operational creditor, and their claim is to be approved by the committee of the creditors. And as and when the resolution process is ready, their claim has to be adjudicated upon. They have also to be paid accordingly, right? Say, for example, if there is a resolution of a company, and if some other company comes and says that, yes, we are ready to discharge the debts of this company and we are ready to take it over. Under such circumstances, the claims of the workmen, they shall also be adjudicated and they shall also be paid accordingly. Whatever their claim will be, they will be paid accordingly. But sometimes it happens that the value of assets do not permit the payment of the entire claim amount. Sometimes it happens. Under such circumstances, the hierarchy is initially the financial creditors, they are given preference over the other kind of creditors. Thereafter, the operational creditors, and thereafter anybody else. So this is the basic hierarchy for the settlements of the claims. Financial creditors, they are to be given preference, or the creditors who are holding some securities. Securities means if some asset of the company is already mortgaged with a financial institution or a bank, he has to be given preference because he is already holding some kind of security regarding the company, right? And so far as Ruchi Soya is concerned, you can have another lecture and I will explain. It will take a lot of time. And I tell you, there is one more thing, one more aspect which you need to understand. That is the clean slate theory. Clean slate theory is a very interesting theory. It has come from the succession point of view. Basically, it is a theory of succession, clean slate succession theory. It is applied in IBC also. There was a case, very interesting case in Supreme Court, wherein the Supreme Court has said that if corporate insolvency resolution process is to be accepted, and if some other company is given the rights of some other company, that is, if a company proposes to buy the corporate debtor, buy the assets or the company of the corporate debtor, under such circumstances, the company which is to be brought is to be handed over to the proposed buyer on the clean slate. Clean slate means it will be free from all debts. The moment
He takes over, it will be free. It will be free. No electricity bill, nothing else. It will be free from all kind of debts. Before it is handed over to the proposed buyer, to the buyer, all kind of debts, they have to be settled, right? So clean slate and this Ruchi Soya, they are very interesting. You can organize. It will take about half an hour, or I will explain. So we just have one last in-call question, which is by Gurmeet Sharma. He has Yes, written please. that if a debtor is unable to file claim after date, is there any other remedy available to that debtor? After date, Yeah. let me tell you, no date has been prescribed by the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. So far as the limitation is concerned, I have already apprised that the limitation for filing this kind of application is 3 years from the date of default, right? But if it is a continuing cause of action, the application can still be filed. For making it a continuing cause of action, you should have fresh acknowledgement of debt, or you should have some fresh transaction in your bank account from the corporate debtors side, right? Or there is one more thing. Let me tell you, if the corporate debtor has shown in his own balance sheet that he owes such and such debts for you, then again you will be within limitation and you will be able to file the application before NCLT or DRT as the case may be, right? All right, sir. So we probably have time for one more question from Yes, Mr. Pirzada Bhai, who has raised his hand. yes, please. Mr. Bari, s- please go ahead. Sorry, Fahad, I'm sorry. I think it's inadvertently by some mistake I have raised a hand. Otherwise, it's not my courage to ask more questions because I want to pave the way for more learned young guys. We Thank you very much. It was a great interaction, sir. Very much inspiring, sir. Very much encouraging. Thank you very Pleasure. much. Hope so Remember we'll me meet in anytime. the future, sir. We'll meet in the future. Thank you. Thank you very much. All right, sir. I'll lower your hand then. But again, what you said goes very true. Mr. Khera has delivered an excellent lecture, and looking at the enormous weight of the preparation that he has done, it is really very inspiring, and it makes us very I tell happy. you, Yeah. whatever I was Yes, sir. telling you, that was all because of the practice which I have I noticed in this. understand, sir. I was not able to prepare anything. Next time. Then you're already much better prepared than all of us here, sir. But again, it was a very enlightening experience to hear you, sir, and to learn about today's topic, sir, because you have probably by experience as well, you have a very thorough understanding of today's topic. And what we wanted to achieve from today's lecture was that we wanted to give our fellow lawyers and including ourselves a sneak peek into how insolvency and bankruptcy code appears and works in practice. And I think we have pretty much achieved that, and the entire credit of the success, sir, goes to you solely. No, it Thanks a goes to lot. the podcast. No, we have only organized these lectures, sir, but thanks a lot for taking out time and for giving a brilliant lecture. Nothing short of brilliant, sir. And of course, we'll also keep your suggestions in mind, keeping in view that there were certain other topics also raised, which again, you seem to be very well prepared on, but we're short on time. Thanks for giving us time, sir. And thanks for making today's lecture, a success. We're sure that we'll have you again on this lecture series, sir. Thanks again from the team of Codecast, and thanks also to all other participants of today's lecture who joined us. And with this, we say goodbye, and thank you all for participating. Next week, we'll again have a new lecture with some other important topic. Thank you. Pleasure. thank you so much, sir. Thank you. Pleasure.